So in last lecture, we have already completed Boyle's law, Charles' law, and Gay-Lussac law. We have seen the relation between pressure, volume, temperature, and mole and volume and temperature. And so now we are going to see the relation between volume and moles. So Boyle's law, may we have learned कि pressure was inversely proportional to volume. In Charles' law, we have learned कि volume was directly proportional to temperature. And in Gay-Lussac, we have learned कि pressure was directly proportional to temperature. Pressure cooker का example दिया था. Now we are going to relate volume with number of moles. Okay. So volume of number of moles का एक simple सा फंडा है कि volume और number of moles directly proportional होते हैं. I'll just share the slideshow to explain this. If you will see the figure carefully, तो basically balloon में और गैस भर रहा है, करेक्ट. उसके वो जो सोडा है उससे और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिलीज एंड दैट इज गेटिंग फिल्ड इन द बलून. व्हेन यू आर फिलिंग more gas, number of molecules when you are increasing, so the volume of the balloon is also increasing. So I can simply say कि number of molecule is directly proportional to the volume. We have very well seen this. अगर मैं कंटेनर ले लूं, कंटेनर में अगर मैंने तुमको बोला कि इतना गैस भरा हुआ है, इतना गैस भरा, if you will try to add more gas, so the volume will increase. So when the number of molecule increases, volume also increases. So number of molecules or number of moles is directly proportional to the volume. So this is what is Avogadro's law. Volume of the gas is directly proportional to the number of moles. So we can just say V1 by V2 is equal to N1 by N2, जैसे अब तक हम लोग कर रहे थे, करेक्ट. तो हमारे चारों फॉर्मूलाज यहाँ पे आ जाते हैं. इन प्रेशर वॉल्यूम का बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर का चार्ल्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर का गे-लुसाक लॉ, और ये अब अवोगाड्रोस लॉ. अवोगाड्रो लॉ को डिफाइन थोड़ा अलग तरह से करते हैं, सर डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं बोलते हैं, बट उसका मतलब सेम ही होता है. यहाँ पे बोला गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑब्वियसली बाकी दोनों कांस्टेंट रखना है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दिस इज अवोगाड्रोस लॉ. Okay, so now as we have completed all the four gas laws, we will bring it together. Now, when we were speaking of the Boyle's law, as per Boyle's law, pressure was inversely proportional to volume. But when we were comparing pressure and volume, temperature and moles were constant. Similarly, as per Charles' law, in Charles' law, volume was directly proportional to temperature, pressure and moles were constant. In Gay-Lussac, pressure and temperature were directly proportional, volume and moles were constant. And in Avogadro, volume and moles were directly proportional, pressure and temperature is constant. But the point is, this constant that you're making some of the parameters, you can do this only in lab. इन रियलिटी ऐसा कुछ कांस्टेंट रहने नहीं वाला है. अगर तुम गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, मे बी मोल्स भी चेंज हो. अगर उसको तुमने प्रॉपरली सील नहीं किया है तो मोल्स भी कम ज्यादा हो जाएंगे. तो एवरीथिंग विल चेंज. सो यहाँ पे तो ये इंडिविजुअल गैस लॉज दो के रिलेशन में थे, बाकी दोनों कांस्टेंट थे. व्हाट इफ नथिंग इज कांस्टेंट एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग? सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी कैन जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर. अभी अगर चारों पैरामीटर्स एंड आई थिंक वॉल्यूम लिंक ऑल द फोर पैरामीटर्स, वॉल्यूम लिंक मोल्स, वॉल्यूम लिंक्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आल्सो लिंक्स प्रेशर. तो अगर मैं वॉल्यूम के बेसिस पे बाकी सब पैरामीटर्स को कंबाइन कर दूं, तो आई नो वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, अवोगाड्रो लॉ. वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ. But it was inversely proportional to pressure, so pressure will come down, it will be Boyle's law. So you will be having PV is directly proportional to NT.
Now I will put a constant, and that constant is universal gas constant. PV is equal to nRT. This equation we need to remember. This is an ideal gas equation. एंड दिस आर जो कांस्टेंट आया है, अभी इंडिविजुअली जो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट आ रहा था, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट आ रहा था, गे लुजैक में और अवोगाड्रो में कांस्टेंट आ रहा था, वो गैस टू गैस चेंज होगा, बट यहाँ पे आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा, आर का एक सिंगल वैल्यू है वही सेम रहेगा. अभी वी हैव टू सी आर के वैल्यूज, मतलब आर का एक ही वैल्यू है, सिर्फ यूनिट चेंज करोगे तो आर का वैल्यू चेंज हो जाता है, बराबर. तो आर का एक ही वैल्यू विल सी इन समटाइम्स, बट बिफोर दैट, अभी जैसे यहाँ पे हम लोग सम्स कर रहे थे, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो हम लोग ने लिखा है ऐसा, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1. करेक्ट. फिर अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तो वी रोट V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2. ठीक है, द फॉर्मूला लिस्ट. यहाँ पे वी विल बी कीपिंग अ नोट ऑफ द फॉर्मूलाज आल्सो. तो फॉर्मूलाज में बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स प्रोपोर्शन थे, तो P1/P2 was equal to V2/V1. As per Charles law, volume and temperature were directly proportional, so V1/V2 is equal to T1/T2. As per Gay-Lussac, pressure and temperature were directly proportional, so P1/P2 is T1/T2. As per Avogadro's law, volume and moles were directly proportional, so V1/V2 is N1/N2. And then we have the ideal gas equation, that is equal to PV equal to nRT. बट अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पीबी चेंज हो रहा है, वीबी चेंज हो रहा है और टीबी चेंज हो रहा है. मतलब केस वन में जब तुम्हारा प्रेशर P1 है, तब तुम्हारा वॉल्यूम V1 है और तुम्हारा टेम्परेचर T1 है. चलो मोल्स को भी चेंज कर देते हैं, मोल्स भी N1 है, आर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा. अगर मैंने प्रेशर को चेंज किया, तो मेरा वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, मोल्स भी चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. तो अब मैं इनको भी तो इक्वेट कर सकता हूं. सो केस वन के हिसाब से आई कैन राइट कि माई आर इज P1V1/N1T1. एंड केस टू के हिसाब से आई कैन राइट माई P2V2 इज N2T2. तो आई कैन जस्ट इक्वेट द टू. So I can finally write P1V1 upon N1T1 equal to P2V2 upon N2T2, और I can just do alternando. Alternando कर सकते हैं. P1V1 ऊपर था तो इसको साथ में ही रखा, P1V1/P2V2 ये तरफ आ गया N1T1/N2T2. तो अब अगर सब कुछ चेंज होगा तो ये यूज करेंगे, बराबर. अभी इनमें अगर कुछ भी कांस्टेंट रह गया तो वो कट जाएगा. तो ये सब कंबाइंड गैस लॉज है. P1V1 upon P2V2 is equal to N1T1 upon N2T2. अब इन दिस अगर मैंने बोला मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी P1V1 upon P2V2 is equal to T1/T2. मोल्स तो कांस्टेंट रह गया. इट इज जस्ट यू हैव टू लुक एट द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT. ठीक है, तो तुमको क्या क्या चेंज करना है, P चेंज करना है, V चेंज करना है, N चेंज करना है. तो P1V1 upon P2V2 is equal to N1/N2. It's as simple as that. Okay, so once when we are done with this, we will see the units of R, the real gas constant units and values of R. So we know it is PV is equal to nRT.
नाउ आर का यूनिट क्या हो सकता है? आर इज नथिंग बट पीवी अपॉन एनटी. ओके, नाउ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट वर्क. Pressure into volume is work and N into T. So the different units of R can be, if I take my work in joules, my temperature is in Kelvin and my mole is also in Kelvin. So this is one of the unit of R. When my work is in joules, the SI unit, this one will be the SI unit. Another unit of R can be, if my work is in liter atmosphere. How come liter atmosphere? My volume is in liter and my pressure is in atmosphere. So the work becomes liter atmosphere. So again, it's Kelvin inverse and it's mole inverse. Another unit of R can be when my volume is in liter, but my pressure is in bar. So it is liter bar, Kelvin inverse, mole inverse. And finally, when my work is in calorie, work can also be in calories. So if it is in calories, so it is calorie, Kelvin inverse, mole inverse. Now, if you have a doubt ki how work is pressure into volume, I can just explain this to you. We are very well aware ki work is nothing but force into displacement. Displacement is the length. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक बढ़ा, तो वी आर वेल अवेयर ऑफ कि इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट. नाउ वी नो कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. सो देयरफॉर वर्क इज नथिंग बट pressure into area into length. Substituted force को pressure into area, and area into length is nothing but volume. So work can also be written as pressure into volume. This is mechanical work, this is chemical work. In gases we say कि work इस तरह से होता है, हमने प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम कम हुआ, बराबर. हमने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वर्क इस तरह से होता है. अभी ये तो यूनिट हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ आर. क्योंकि एक ही वैल्यू है, बट क्योंकि अलग अलग यूनिट्स है, तो यूनिट कन्वर्जन में थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज होता है. तो ये जो कांस्टेंट है उसका एसआई वैल्यू इज 8.314. SI system, joules per Kelvin per mole. When do you use this value? When do you use this value? जब तुम्हारा प्रेशर दिया रहेगा पास्कल में. When your pressure is given in Pascal or Newton per meter square. See, your pressure is given in the SI unit and your volume is also in SI unit, meter cube. So when your pressure is in SI unit, your volume is in SI unit, so तुम्हारा R भी SI unit joules में होगा. So this is the first unit, first value of R, and you will be using it when pressure will be in Pascal and volume will be in meter cube. बाकी सब simple है. The other value of R is 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. When do you use this? When your pressure will be in atmosphere and when your volume will be in liters. Okay, liters can also be written as decimeter cube. We have another unit of R, which is 0.083. See, ज्यादा फर्क नहीं है. लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये दोनों में ज्यादा फर्क इसीलिए नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर और बार में फर्क नहीं है. ये कब यूज करेंगे? जब मेरा प्रेशर बार में है और मेरा वॉल्यूम लीटर्स या डेसीमीटर क्यूब में है. फाइनल वैल्यू कैलोरी में इट इज एग्जैक्टली 1.98. लेकिन हम लोग एंट्रेंसेस में करते हैं तो वी जस्ट टेक 2. वी कैन टेक 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. अच्छा, इसका कोई प्रेशर और वॉल्यूम का कंडीशन नहीं है, लेकिन जब तुमको कैलोरी में चाहिए, मतलब P into V, when P into V has to be in Kelvin, calorie, sorry, then you use this unit. Okay, after the unit of R, we can do some changes in the equation, that like we have PV is equal to nRT, right?
So I'll just change this a little bit. Moles we can write weight given upon molecular weight. So this comes out to be pressure into volume is equal to weight upon molecular weight RT. So therefore, if I bring molar mass over there, pressure into molar mass, weight upon volume RT. So weight by volume is nothing but density. So I have another equation which says PM is equal to density RT, where P is pressure, M is molar mass of the gas, D is density, R is gas constant, and D is temperature. So I have one more equation which says PM is equal to DRT. So as PM is equal to DRT, I can write one more formula. P1 upon P2 will become equal to D1 T1 by D2 T2. Now I have not changed molar mass because molar mass will mostly remain constant. अगर मैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दूं तो डेंसिटी के टर्म्स में इट इज P1 V1 P1 by P2 is D1 by D2. Apart from this, you should know the moles का formula. तो पहला मोल्स का फॉर्मूला तो वेट के टर्म्स में ये वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. द नेक्स्ट मोल्स का फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर. What is interesting is the third moles का formula. Third moles का formula we have done volume of gas in liters at STP upon 22.4. We can actually derive this now. How we can derive it? Now, what is STP and what is NTP? STP is standard temperature pressure, and whenever STP is given, they are trying to say that temperature is 0 degrees Celsius, which is 273 Kelvin, and pressure is 1 atmosphere. So STP is this 273 Kelvin and pressure is 1 atmosphere. So if I take my equation PV equal to nRT, if I take the condition at STP, so here pressure I am taking as 1 atmosphere and temperature I am taking as 273 and I'll substitute it over there. तो pressure हो गया 1. अब क्योंकि pressure atmosphere में है, क्योंकि मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो मैं वॉल्यूम को लीटर में रखूंगा और आर आई विल यूज 0.0821. तो वॉल्यूम मेरा लीटर में आ गया, n is moles, r I have used 0.0821 and temperature is 273 Kelvin. When you multiply this, it comes out to be 22.4. The volume of gas in liters is equal to number of moles into 22.4. So this is the formula that we get. Number of moles is nothing but volume of gas, but this can only be used when STP is mentioned. क्योंकि उसी से प्रूव हुआ है volume of gas in liters at STP upon 22.4. These are all the formulas that we have, and then we just have to do sums.